Hello friends, this is Dr. Meenakshi. Welcome back to my channel. Today again I'm here with task 2. So let's check statement first. Statement A is full-time university students spend most of the time studying. Meaning is full-time university students की गल की जाए ज़्यादा time spend करते हैं study पे. They should do other activities too. उन्होंने other activities भी करनी चाहिए ने. Do you agree or disagree? You all know whenever we are talking about university or varsity, so it is all about education, it is all about study. But उन्होंने बोले कि study के नाल कितना किते उन्होंने different जड़ियाँ other activities ने वो भी करनी चाहिए ने. Agree or disagree? So other activities in the sense it means extracurricular activities. Got it, beta ji? So do you agree or disagree? One side essay you have to write here because it's all about agree or disagree. Got it? Let's start with introduction part. You all know whenever we are going to write about agree or disagree, so you have to start with it is argued. So arguments are there, right? Arguments केरी चीज़ ने कि उन्होंने other activities करनी चाहिए ने या फिर नहीं करनी चाहिए. Got it? So that's why you will start introduction with it is argued that statement will be by using whether or. Whether after that you have to just rephrase the given statement here. तो इसे rephrase करोगे कितना लिख सकते हैं? Students, pupils means students. Pupils, yes, who are enrolled or directly लिख दो नाली enrolled full time in the varsity should participate in extracurricular activities or not. Yes, right? So that is all about rephrasing. So ध्यान नाल चेक करोगे same as लिखे बेटा जी. So whether pupils is all about the students who are enrolled full time in the varsity. Varsity means university. So they should participate. कि उन्होंने participate करना चाहिए या extracurricular activities is all about the other activities or not. नहीं करना चाहिए. So here we have two statements, former and later one. Former is this one, first one. Later is this one, not. Got it? So you have to give your opinion here. I do agree with the former notion because I am saying that is necessary for the students to participate in the other activities besides studying. Got it? So that's all about introduction part. Got it beta? So आप agree कितना former दे नाल कि उन्होंने participate करना चाहिए या. Now come to body paragraph 1. So as we do agree with the former notion, so you have to write 4 points related to former notion. Got it? So let's start discussion. हाँ जी, सब तो पहला पॉइंट बेटा जी की लिखांगे क्यों जरूरी है कि वो पार्टिसिपेट करन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ਦੇ ਵਿੱਚ. नंबर 1 इज आई वुड से कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਵਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਗॉट इट ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਇਨ ਦ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਟੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਸਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. समझ आ रही है ना? So we are going to write कि जो activities ने these benefit or these provide benefit the students academically. Got it? समझ आ गई ना? So उस तो माना आपा लिखे आया कि ये जो activities ने वो lesson सिखाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ. Along with that, I would say कि ਜਿਹੜੀਆਂ extra curricular activities ਨੇ ਇਹ self confidence, self esteem, self respect ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. Got it? So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ activities ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
फॉर एग्जाम्पल एथलैटिक्स की गल कर लो, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, थिएटर, राइट, ये सारिया एक्टिविटीज़ ने जड़ियाँ वो बच्चे को सिखांदियां ने कि जो डिसिपलिन है उन्होंने किवें मेनटेन करना है. Got it? So that's why we are saying कि these are necessary for them to perform. ये activities only जरूरी नहीं कि वो perform करें. Okay, so I'm going to mention here first point. Directly you will start with extra curricular activities benefit the students academically. They learn character building lessons, got it, which they can not only apply to their study habits but also in their lives. I hope it's clear, Putter. Exactly. So I would say activities such as म्यूजिक, थिएटर, ड्रामा, ये लिख सकते हो तुसी, कोई भी एक्टिविटीज़ की गल कर लो. थिएटर, म्यूजिक, थिएटर दे विच आर ई भी सही है तो ई आर इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो बी इन टू माइंड. म्यूजिक, थिएटर, एथलेटिक्स, develop or these teach, having the same meaning, जितना मर्जी लिख लो. Teach them how to maintain discipline. Got it, Putter? And last तुसी लिख सकते हो, these also play pivotal role in order to develop strengths, self-confidence, self-esteem and self-respect. Got it? So that is all about first point. I hope it's clear to everybody. Now come to second one. हाँ जी, सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਰਟ ਯੂ ਨੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਹੋਣ ਮੀਨਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ, ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. क्यों होंगे ने? बिकॉज दे हैव टू थिंक क्रिएटिवली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ वर्क ऑफ आर्ट. बिकॉज उन्होंने क्रिएटिवली सोचना पैंदा है, राइट. किसी भी तरह का वर्क ऑफ आर्ट है जो उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए. So that's why we are saying these are also beneficial. So that's why it's necessary to perform these kind of activities by the university students. So number 2, I will write it as these activities, extracurricular activities are also important or play the pivotal role or vital role, जितना मर्जी लिख सकते हो, right. किदे लिए or I will start with these activities in art. So I'm going to write art in the codes, particular subject, right. So in art is also beneficial. Students can hone their analytical skills and creative problem solving skills. Problem solving skills, since they have to think creatively
perform or to produce any work of art. Got it पुत्र? I hope it's clear. Got it? So आप सेकेंड की लिखिया hone. Hone means improve. Analytical skills, other problem solving skills ने जड़ियाँ ओ बच्चों दिया hone हुंदियाँ ने, students दिया hone हुंदियाँ ने, right? Because since is all about because the reason they are they have to think creatively to produce any work of art. Got it? So here are the two reasons which you will write in body paragraph 1. Now come to body paragraph 2, in which you have to write other two reasons why you do agree with the former notion. So third one ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, I would say कि ਜਿਹੜੀ ਹੈ extra curricular activities ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ real life skills ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ improve ਕਰਦੇ ਨੇ. Right? So real life skills, for example, we can talk about time management, right? As we know कि because उन्होंने statement ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ full time university students as they do remain busy from 9 a.m. to 5 p.m. so busy ने I would say कि टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं कितना सीख रहे हैं बिकॉज उन्होंने कितना किते जो बिजी स्कैड्यूल है वो कुछ टाइम स्नैच करना पैना है कि स्नैच करना पैना सो दैट वो ये एक्टिविटीज़ ਨੂੰ परफॉर्म कर सकन. गॉट इट? सो ये होएगा बेटा जी उन्होंने प्रॉपर टाइम दी ਨੂੰ किद्दां मैनेज करना ये सीख जाएंगे. टाइम मैनेजमेंट आ जाऊगी किवें आ जाऊगी क्योंकि अंडरस्टूड टाइम ਨੂੰ स्नैच करेंगे तो बाकी टाइम उन्होंने किवें एडजस्ट करना है इन ऑर्डर टू परफॉर्म ईच एंड एवरी असाइन टास्क. सो जो भी टास्क उन्होंने असाइन किया जाऊगा यूनिवर्सिटी के दोबारा है ना टीचर्स के दोबारा ट्यूटर्स के दोबारा तो उन्होंने किद्दां कंप्लीट करना आ. राइट? सो स्पैसीफाइड टाइम पीरियड के समझ उन्होंने आ जाएगी. गॉट इट? सो आई वुड राइट अबाउट so these are also essential in order to I will directly start with in order to teach the youngsters yes the real life skills. In order to teach the youngsters what its real life skills डायरेक्टली लिख दो नाली सच एज टाइम मैनेजमेंट. यस सच एज टाइम मैनेजमेंट एज दे विल हैव टू स्नैच सम टाइम फ्रॉम देयर बिजी स्कैड्यूल. सो जो उन्होंने बिजी स्कैड्यूल है वो उन्होंने कुछ टाइम स्नैच करना पाऊगा कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज. सो जी एक्टिविटीज ने एग्जैक्टली एक्टिविटीज ने उन्होंने परफॉर्म करने दे लई अंडरस्टूड टाइम स्नैच करेंगे दैन दे विल बी able to so पुत्र जो किने एबल हो जाएंगे yes टाइम मैनेज करेंगे certainly yes able to manage their time to complete the assigned task. Certainly yes. So that was all about third point. Now come to fourth and the last one. So last one is all about the social skills which are very important to become a good citizen. Yes, certainly yes. So it's all about the social skills, Putraji. So I will start with education is not solely learned by just reading the different kind of textbooks or books, right? काफ़ी तरह के जो बुक्स ने उन्होंने रीड करके ही तुसी जी नॉलेज है एक्वायर नहीं कर सकते. इट्स ऑल अबाउट इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ नॉलेज कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय आवर पीयर्स व्हेनेवर वी इंटरेक्ट विद आवर पीयर्स. Whenever we are going to perform extracurricular activities, that means you have to intermingle, you have to interact with your peer ones, right? Because you are going to perform a task in a group. Got it now?
सो तुहानू अपने पीयर्स नाल ही जिहड़ा हैगा आ ओह जिहड़ा पर्टिकुलर टास्क होएगा पर्टिकुलर एक्टिविटी होएगी वो परफॉर्म करनी पैनी आ करोगे उहदे नाल इंटरमिंगल होंगे तो जो इंटरमिंगल होंगे इंटरैक्ट करते हैं दैट मीनस बहुत सारिया जिहड़ियां सोशल स्किल्स ने साडियां होण हुंदियां ने फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग केयरिंग कोऑपरेशन टीम वर्क स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन एटसेट्रा राइट सो ये सारी सोशल स्किल्स ने जिहड़ियां कि बहुत ज़्यादा जरूरी ने एंड मोर ओवर आई वुड से कि जिहड़ियां सोशल स्किल्स ने बहुत अहम रोल प्ले करदियां ने यंगस्टर्स दा जिहड़ा फ्यूचर नूं ब्राइट बनाउण दे विच किद्दां nowadays or in this present scenario most of the employers are seeking for those kind of employees who not only have the different academic qualifications but also have good social skills. Got it? So that is all about the fourth point. So I would say these activities or directly I will start with education. Yes, education is not solely learned by reading different textbooks. Not only, solely means only सिर्फ तो सिर्फ असी लर्न डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स नू करके ही एक्वायर नहीं कर सकते एजुकेशन बट ऑल्सो incredible amount of knowledge can be acquired from our peers. Yes, certainly yes. Got it? ये लाइन द मीनिंग समझ आ गया पुत्र जी? Very good. So then I would say when recreational activities or when extracurricular activities are performed in a group, students intermingle. It's intermingle. Intermingle is all about interact karna. Intermingle with each other and hone their again hone improve karna putter ji and hone their social skills such as then you have to write here which ones you're talking about. It's all about I would say sharing, caring, cooperation, team work, or I would say spirit of competition, etc. It's ETCETERA, not ETC full stop. You have to write your full form. You can't use any kind of abbreviation in writing module. Got it पुत्र जी? So आप लिखिए सारियां improve होंदियां ने. And moreover नाली लिखूंगी. And moreover these skills are also advantageous. Advantages means beneficial, helpful. Yes, these are also advantages to make the bright future. To make their bright future. There means youngsters, students, bright future. As in this present scenario means nowadays in this present scenario most of the employers are seeking for those kind of employees
who not only have different academic qualifications but also have good social skills. Got it, Putraji? That's all about your task 2. Here we have 4 points to write here. Got it, beta? So at last you all know about encapsulation. No, recapitulation. Yeah, you can also write here encapsulation or conclusion. So what you will write there? You have to just reiterate the thesis line, right? So thesis line, it's all about introduction part where you are going to give your opinion. So you have to just reiterate it. Okay, so I would like to reiterate, then I do concur with the former notion. That's all, nothing else you will write in recapitulation or conclusion. So that's all about your task 2. Milte hain next time navi video de naal. Tab tak liye thank you. Have a nice day. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel. Do like, share and comment. Bye bye.